जब तक कि ये मंच पर विराजमान हो, इनका एक परिचय. P. Shivakame is a prolific Tamil writer and a social activist. She is a retired IAS officer who served the government of Tamil Nadu and government of India for 28 years. She has 6 novels, 4 short story collections, and 4 essay collections in Tamil to her credit. Her most recent novel in English is The Language of the Mirror, awarded with the title of the Icon of Woman Changing India. Shivakami has also been conferred the Doctor of Divinity by the Academy of Ecumenical Indian Theology and Church Administration. She has been editing Pudia Kodangi, a subaltern monthly magazine. Ma'am, we welcome you. I think Mr. Rahul Saini, he's coming. So I'm reading out his introduction. Mr. Rahul Saini, formerly trained architect, also holds a master's degree in English literature. His books, Those Small Little Things, was translated in Hindi and won the award for the best translation by the Federation of Indian Publishers. Paperback Dreams won the A3 Foundation Award for the best satire. He has authored 7 books and his latest, The Part I Left With You, has been well received across the country. We welcome you, sir. We are having with us Ms. Gayatri Manchanda, who is a poet, translator, and associated with corporate world across hospitality, expert management, and real estate, managing inclusive roles. She translated a book from Hindi to English, Telgi, Diary of a Reporter, and 3 books of translation in progress. She assisted for the compilation of 3 books. She has edited 2 books. She is actively working on corporate writing and content strategy and uncredited work of translation on social media and for NGOs. We welcome you, ma'am. We are having with us Mr. Gaurang Baburao Bhandia, Assistant Professor of Konkani at DCT's Dempe College of Arts and Science, Panjim, Goa. He is an eminent writer and translator in Konkani. He is the author of the short story collection Rhythm Bowls and has translated children's stories from platforms such as Pratham Books and Konkani Bhasha Mandal. His stories and articles have appeared in several Konkani magazines, and he has published 3 research papers in reputed journals. Recipient of various scholarships and fellowships promoting Konkani culture and linguistic heritage, he is currently pursuing PhD on critical study of the plays of Vishnu Surya Wagh. We welcome you, sir. And with the permission of the chair for this session, still we are waiting for one of our, Mr. Rahul Saini. So if you allow, we can start the session. If he will come, he will join it. He was the first storyteller for the session. So in his absence, I would seek your permission to invite, to request Ms. Gayatri Manchanda to please come up and narrate her story, please. And we are having only 1 hour till 5 we have, so ma'am, please. आप सभी को नमस्कार. कहानी का शीर्षक है वीनस. एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? Am I audible now? कहानी का शीर्षक है वीनस. एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? इजिप्शियन फराहों से भरे आयताकार हॉल के बीचों बीच रखी उस लंबी आयताकार बेंच पर एक यही कोना खाली नज़र आ रहा था, पर वहाँ अभी एक लैपटॉप बैग विराजमान था. मेरे आग्रह से अनभिज्ञ लैपटॉप बैग से सटी युवती अपने आईपैड पर बेतहाशा हाथ चला रही थी. हालांकि मेरा ये आग्रह अंग्रेज़ी में था, पर उसने ना ही मेरी बात पर कोई तवज्जो दी, ना ही जवाब दिया. आज बुधवार था. मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे अपनी आंखों पर धूप का चश्मा लगाए म्यूज़ियम के बाहर सांप सी लंबी कतार में शामिल हो गई थी. पानी की हल्की धार की तरह बहते लोगों के हुजूम से 12 बजे तक ब्रिटिश म्यूज़ियम इंसानों के एक विशालकाय पेनिनसुला में तब्दील हो गया था.
11 बजे हिंदुस्तानी पवेलियन के मध्य रखी नटराज की मूर्ति से हटकर मेरा ध्यान बाहर गया तो देखा हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। झीनी झीनी सवियों से तिरछी बूंदें म्यूजियम की दीवारों पर पड़कर विलीन होती बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपनी आंखों में उमड़ आए सैलाब को था देते हुए मैं ओरिएंटल पवेलियन के छोर पर बैठे लाफिंग बुद्धा की तरफ मुड़ गई। दरअसल ये मेरी यूनाइटेड किंगडम की पहली यात्रा थी और लंदन में पहला सप्ताहांत। नया शहर, नया माहौल और नए लोग। थोड़ा सोच संभल कर, देख समझ कर नई जगह की आबो हवा और लोगों के मिजाज की आदत डाल रही थी। हिंदुस्तान छोड़ने से पहले स्कूल के एक पुराने दोस्त रवि से हुई बातचीत याद आ गई। लंदन जाकर क्या करना है, क्या नहीं करना की 4 मील लंबी लिस्ट में उसकी एक ये सलाह भी शामिल थी। देखो अमिता, लंदन की लड़कियों और मौसम के मिजाज का कुछ भरोसा नहीं, जाने कब आप पर बरस जाएं, इसलिए एक छाता हमेशा साथ रखना। रवि 3 साल पहले ही किंग्स कॉलेज से मास्टर डिग्री लेकर लौटा था और शायद उस बेचारे का दिल यहाँ कई बार टूटा था। वैसे अच्छा ही किया। रवि की बात मानकर मैंने अपने छोटे बैकपैक में पानी की बोतल और छाता रखने की आदत डाल ली। मुझे बचपन से ही यूनान और मिस्र के इतिहास में खास रुचि थी। यहाँ ब्रिटिश म्यूजियम में मिस्र के कई पवेलियन थे और यूनान के भी। म्यूजियम की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं अब बिल्डिंग के आखिरी छोर तक आ पहुँची थी और अब बाकी म्यूजियम बैठकर देखने को मन था। वैसे भी सुबह से चल रही थी। यूथ हॉस्टल से पैदल ग्रैंड रसल स्ट्रीट तक आए। इस शहर को देखने का यही दस्तूर है। आप पैदल चलते हैं, हर गली कूचा आपको सम्मोहित करता है। पर सच कहूँ, पिछले 2 घंटे से म्यूजियम की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते मेरी टांगें अब जवाब दे रही थी। और इतने चलने की आदत ही कहाँ थी मुझे। बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में काम करने वाली बेचारी मैं मधुमक्खी के छत्ते की वर्किंग बी की तरह सुबह ओला से दफ्तर जाती और पूरा दिन अपने डेस्क पर बैठ कोडिंग करने के बाद शाम को शेयर्ड ऊबर से वापस पीजी के कमरे में आती। आधा सप्ताहांत कपड़े धोने इस्त्री करने में जाता और बाकी बचा घर की याद में रोने में। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? मैंने फिर से पूछा। मुझे लगा आसपास इतना शोर है, शायद पहली बार उसे मेरा आग्रह ठीक से नहीं सुना होगा, इसलिए दोबारा पूछ लेती हूँ। कान पर हेडफोन लगाए मेरी ही कदकाठी की जामुनी बालों वाली लड़की शायद कुछ मेरी उम्र की रही होगी। लड़की नहीं, औरत थी शायद, या फिर उसके बीच की किसी उम्र पर ठहरी एक स्त्री जिसका व्यक्तित्व लड़कपन की सीमा लांघ कर प्रौढ़ता के शैशवकाल की तरफ नन्हे पग ले रहा था। पर इस वक्त उस लड़की की उम्र का अनुमान लगाने से ज़्यादा ज़रूरत मुझे इस लकड़ी की बेंच पर बैठने की थी। 10 साल की तकनीकी नौकरी में ये मेरा पहली विदेशी पोस्टिंग थी। वैसे तो मैं यहाँ पहले ही भेजी जाती, पर कुछ साल निधि मुद्दों के चलते फिर 3 साल कोरोना और उसके बाद घर से काम करने में निकल गए। मेरा नया दफ्तर कैम्ब्रिज में था, पर मैं सप्ताहांत में लंदन घूमने के लिए पहले आ गई थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अपना गला साफ करते हुए मैंने आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करके फिर से पूछा। ऐसा नहीं था कि मैं इतनी औपचारिकता दिखाने की आदी थी। दिल्ली की लड़की थी और अपना हक छीन कर लेना डीटीसी बसों और ऑटो में धक्के खाकर सीखा था। बाकी का साहस पुणे और बेंगलोर जैसी दौड़ भाग वाली शहरों में रहकर आ गया। मैं धम से बैठ जाती, पर वो लड़की अपने लैपटॉप बैग पर कोहनी टिकाकर एप्पल पेंसिल से अपने आईपैड पर खचाखच हाथ चला रही थी। वो कोसों लंबा बेमुरव्वत बेंच पहले से ही ठसाठस भरा था और मेरी तरह और लोग भी बेंच पर बैठकर मिस्र के पुराने खंडित फराहों को गर्दन उचका कर देखने आए थे। वैसे मैं कहीं और भी बैठ सकती थी। कैफ़े गई थी। बाहर बारिश की वजह से बिना छाते के आए लोग पूरे म्यूजियम में मधुमक्खी के छत्तों की तरह फैले हुए थे। भीड़ से मुझे घबराहट होती है और उत्साहट भी, इसीलिए कैफेटेरिया में बैठ के दम घुटाने से अच्छा मैंने इस आयताकार कमरे में बैठकर फराहो देखना उचित समझा। एक्सक्यूज़ मी, इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोल पाती, उस लड़की ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर लैपटॉप बैग अपनी गोद में रख लिया और फिर से स्केचिंग करने लगी। इस आकस्मिकता से मैं थोड़ा झेप गई, फिर हल्का सा मुस्कुराकर थैंक यू बोली।
गर्दन को बाएं से दाएं घुमाती मेरी नज़र अचानक उसके आईपैड पर आकर ठहर गई। स्क्रीन पर गर्दन झुकाए एक घुटने के बल बैठी किसी नग्न स्त्री का खूबसूरत पर दर भरा रेखा चित्र अंकित था। उस लड़की ने स्केच की पीठ पर एक कटीली तार पर नील के निशान उकेरे थे और रीढ़ की हड्डी पर फफोलों की ज्वलित नदी अंकित कर दी थी। आँख की सीध में देखा तो एक छोटा कॉरिडोर दिखा जो ग्रीक पवेलियन की तरफ जाता था। उस हॉल के बीचों बीच शर्म की गठरी बने हुए उस स्त्री का एक विशालकाय स्टैचू था। अद्भुत, मेरे मुंह से सहसा निकल गया। दिस स्केच इज मोस्ट एक्सक्विजिट। पहली बार उस लड़की ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कृतज्ञता से सर हिला दिया। सलेटी आंसुओं की 2 बूंदें छलक कर उसके आईपैड के ग्लास पर ठहर गईं। मैंने अपने बैग से तुरंत एक टिश्यू पेपर निकालकर खामोशी से उसकी तरफ बढ़ा दिया। हम दोनों चुपचाप साथ बैठे बहुत देर तक उस स्टैचू की तरफ देखते रहे। लोग दूसरों के ऊपर अपनी भावनाओं की बोझ नहीं डालना चाहते, खास तौर से एक अनजान इंसान पर जिससे वो 5 मिनट पहले ही मिले हों। और वैसे भी दुनिया में बहुत कम कंधे इतने मजबूत होते हैं कि कोई औरत उन पर सर रख दें और वो झुके नहीं। इसलिए औरतें आंचल में मुंह छुपाकर, काला चश्मा आंखों पर लगाकर अपनी चीखें अंतस की परतों में दफन कर देती हैं, पर किसी के साथ खुलकर नहीं बांट पाती। ऐसे में कई बार वे अनजान लोगों से ऐसी बातें कह जाती हैं जो वो बंद कमरे में शीशे के सामने भी न कह पाती हों। शर्म हमेशा औरत के हिस्से ही में क्यों आती है? कुछ देर खामोश रहने के बाद स्टैचू की तरफ एकदम देखती हुई वो लड़की अंग्रेजी में बोली। वह शायद ब्रिटेन की रहने वाली थी, पर मुझे उसका लहजा समझने में तकलीफ नहीं हुई। मेरी आंखों में उठते सवालों को वो बिन पढ़े शायद पढ़ चुकी थी। क्या आप जानती हैं ये मार्बल स्टैचू किसका है? उसने मुझसे अंग्रेजी में पूछा तो मैंने अपना सर ना में हिला दिया। मैं यहाँ पेविलियन के दूसरे छोर से आई थी और उसके बाद मुझे ग्रीक पवेलियन में जाना था। वीनस, जिसको एफ्रोडाइट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में वीनस को प्रेम की देवी का दर्जा दिया गया है और इस स्टैचू का नाम है क्राउचिंग वीनस। क्या आप देख पा रही हैं कैसे अपने नग्न नितंबों को सिकोड़ती, एक घुटने के बल झुकी हुई, अपने हाथ से अपना वक्षस्थल छुपाती प्रेम की देवी अपनी मर्यादा को धूमिल होने से बचाने की भरसक कोशिश कर रही है। मैंने देखा उस मदमाते बदन वाली स्टैचू को, खुले बाल, कंधे पर बिखरे हुए, सीधा हाथ आगे छाती की तरफ और बायां हाथ बाईं टांग के ऊपर टिका था। अल्प मौन के बाद वो बोली, ये स्टैचू दर्शक को एक वॉयर बनाने के लिए बनाया गया है, जो नहाती हुई वीनस की सुंदर छवि को हर ओर से निहार सके। आप देख रही हैं ना कैसे लोग कमरे के केंद्र में रखे स्टैचू के इर्द गिर्द गिद्धों की तरह चक्कर काट रहे हैं, जैसे कि उसके अंग अंग को अपनी आंखों से नोच लेना चाहते हों। ये स्टैचू 200 या फिर 100 बीसी में एंटोनियन काल के दौरान बना होगा, पर समाज हमारा तब से अब कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। A woman continues to be objectified as a commodity in this world. उसकी आवाज़ में उभर आया आवेग ने मुझे थोड़ा विचलित कर दिया। मेरी बढ़ती असहजता को भांपते हुए उसने अपना लहजा बदला। पर आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ आसपास खंडित बिना सर या हाथ पार वाले राजाओं के स्टैचूज़ के बीच में प्रेम की देवी वाकई प्रेम की मूर्त की तरह कमरे के दिल में सजाई गई है। देखिए ना कैसे सबकी नज़रें बस उसी पर टिकी हैं। शी लिटरली ओन्स द रूम। अपने बाएं हाथ को स्टैचू की तरफ बढ़ाकर जब उसने ये बात कही, बात पहले वाली थी, बस कहने का अंदाज और मायने बदल गए थे। मेरी नज़र उसकी उठी बाजू से बाहर झांकती कलाई पर पड़ी, जिस पर कटने के कुछ आड़े तिरछे भूरे निशान मौजूद थे। सक पकाकर मैंने अपनी नज़र वापस वीनस की स्टैचू पर टिका दी और मन में उमड़ रहे सवालों पर लगाम लगाई। आप दर्शन शास्त्र पढ़ती हैं या पुरातन शास्त्र? पर मैं उसके बारे में जानने को और उत्सुक थी। दोनों ही नहीं, ये तो बस वैसे ही शौक, कहती वह मुस्कुरा दी। वो पार्क के सामने लाल रंग की बिल्डिंग देख रही हैं आप? मैं वहीं के एक दफ्तर में नौकरी करती हूँ।
आज सुबह से बहुत घुटन महसूस हो रही थी तो यहाँ आकर बैठ गई। ये संग्रहालय एक मेरा सुकून का कोना है। यहाँ आकर पुरातत्व के खंडरों से निकाली गई कहानियाँ और उनकी समस्याएं जानकर मैं अपने रोज़मर्रा की दिक्कतों को बहुत छोटा मानती हूँ। मुझे भी शायद म्यूज़ियम इसीलिए पसंद है क्योंकि ऐतिहासिक हादसे और त्रासदियों से निकले जीवंत सबूत यहाँ देखकर अपने जीवन को तहस नहस कर जाती सुनामी भी हवा के झोंकों के समान लगने लगती है। ये लड़की भी यहाँ आकर वही कर रही है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अचानक वो उठ खड़ी हुई और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझे भी, मैंने जवाब दिया। टेक केयर कहती वो अपना लैपटॉप बैग लेकर भीड़ में विलीन हो गई। कई बार लोगों के बीच खामोशियाँ चाबियाँ का काम करती हैं। साथ में बैठे दो अनजान लोग जिन्होंने ना हाथ मिलाया हो न एक दूसरे के नाम पूछे हो, ऐसे में लोग एक दूसरे के अंतर्मन पर लगे ऐसे तालों की चाबियां बन जाते हैं जिन पर बरसों से जंग लग चुका हो। वीनस को इस अनामिका की आंखों से देखते समझते मेरे अंतर के द्वार पर लगा भी एक ताला खुल गया था। मुझे निर्मल वर्मा का लिखा याद आ गया। हमारा बड़प्पन तो हर कोई देखता है, लेकिन अपनी शर्म सिर्फ हम देख पाते हैं। और आज मैंने ये समझा कि जब हमारी शर्म लोगों के लिए एक वॉयर प्लेजर, एक तमाशा बन के रह जाए, तो प्रेम की देवी वीनस बनकर उस कमरे का अस्तित्व पूरी तरह ग्रहण कर लेना चाहिए। और एक ऐसी ही शर्म से भागकर तो मैं यहाँ आई थी। त्याग दी गई स्त्री होने का कलंक, एक नाकामयाब रिश्ते का बोझा अपने बैकपैक पर ढोते ढोते थक गई थी। मैंने तय कर लिया, यहाँ वीनस के पास अपनी शर्म की गठरी छोड़ कर जाऊँगी। वैसे भी तो इतना कुछ खंडित है यहाँ पर, तो कुछ खंडित टुकड़े मेरे अतीत के भी सही। आदतन मेरा दायां हाथ मेरी बाईं कलाई पर अंकित कटी फटी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के भूरे घावों को सहलाने लगा। एक्सक्यूज़ मी, मैं इस बेंच पे बैठ जावां? अपने ख्यालों में लिप्त मेरा ध्यान साथ में आके खड़ी एक सलीकेदार सलवार कमीज और स्पोर्ट्स जूते पहने बुजुर्ग महिला पर नहीं गया था। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, उनकी दूसरी बार कहने से पहले ही मैंने अपना बैग वहाँ से हटा दिया। लंदन दी बारिश से पटियाला दी कुड़ियों तो ज़्यादा तुनक मिजाज निकली। देखो, चुप ही नहीं होती पई, कहती वो बेंच पर बैठ गई। उनकी बात सुनकर मुझे रवि की कही बात याद आ गई और मैं ज़ोर से हंस पड़ी। मुझे हंसता देखकर वो शायद बातचीत को आगे ले जाना चाह रही थी और तभी मेरी स्मार्ट घड़ी का अलार्म बीप बीप करके बजने लगा। दोपहर के 1 बज रहे थे। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, पर मेरे बैकपैक में छतरी थी। रास्ते में खाना खाने के बाद मुझे 3 बजे मुलान रूज म्यूज़िकल देखने के लिए ओपेरा हाउस पहुंचना था। मैं जल्दी हाँ आंटी, मैनू किथे छेती पहुंचना है, कहती हुई मैंने अपने कदम ग्रीप पेविलियन की तरफ बढ़ा दिए और आगे जाते जाते क्राउचिंग वीनस को एक हवाई चुंबन देती हुई मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम से बाहर निकल गई। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा श्री गौरांग भांडिया जी से कि वो आए अपनी कहानी पढ़े। नमस्कार। सबसे पहले मैं साहित्य अकादमी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं मेरी कहानी यहाँ प्रस्तुत कर सकूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है अब क्या किया जाए। अब क्या किया जाए। क्या हुआ मदन, क्या फुसफुसाते हुए आ रहे हो? गुस्से से तमतमाते हुए घर के अंदर आ रहे मदन को देखकर वैशाली ने पूछा। वैशाली, वो विकास मुझसे एक दिन बुरी तरह मार खाएगा। भाई है तो इसलिए अब दया नहीं दिखाऊंगा। मन करता है गड्ढा खोदकर उसी में गाड़ दूं। अगर साहब के बारे में उसने फिर उल्टा सीधा कुछ बोला ना तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुस्से में आग बबूला होकर मदन घर आ गया था। भाऊ वेल्लेकार की प्रचार सभा में विकास ने जिस तरह की बातें रावजी नायक के बारे में की थी, उसका मोबाइल पर वीडियो देखकर मदन पूरी तरह से खून का प्यासा हो चुका था। रावजी नायक का चरित्र सोने के समान था
और उनके चरित्र पर इस तरह फिजूल के आरोप लगाकर लोगों के मन में झूठ के बीज बोने वाले विकास और उसके साथियों पर मदन को बहुत गुस्सा आ रहा था। दुख सिर्फ इस बात का था कि मदन और विकास दोनों भाई थे। विकास और मदन तड़ंगा मड़ार के निवासी थे। मदन की किराने की दुकान थी और विकास बाबू एल्लेकर के कार्यालय में काम करता था। दोनों भाइयों में आपस में बिल्कुल नहीं जमती थी। दोनों भाइयों की घरवालियां और बच्चे भी इस पंजे में फंसे हुए थे। तड़ंगामड़ एक ऐसा इलाका था जो चुनाव के कारण बढ़कर रह गया था। केवल मदन ही नहीं और विकास ने नहीं, बल्कि ऐसे कई घर थे जहां पर एक घर में दो पक्ष तैयार हो गए थे। जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाला था। समाज पक्ष की ओर से भाऊ एल्लेकर और सशक्त पक्ष की ओर से रावजी नायक चुनाव लड़ने वाले थे। कई महीनों से चुनाव का प्रचार आग की तरह फैल रहा था और घर घर में सिर्फ चुनाव की ही खबरें पर चर्चा हो रही थी। चुनाव के कारण दुर्दैव से रिश्ते नाते भी बढ़ गए थे। मदन रावजी नायक के पक्ष की ओर से और विकास बाबू एल्लेकर की पक्ष ओर से। दोनों भाई अलग अलग पक्ष के कार्यकर्ता थे। रावजी ने मदन को किराने की दुकान शुरू करने के लिए मदद की थी और विकास को अपने कार्यालय में नौकरी पर भाऊ ने रख दिया था। कठिन समय पर काम आने वाले व्यक्ति का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा दोनों का मत था। उनके इसी विचार के कारण दोनों एक दो गट में कब बढ़ गए उन्हें पता भी नहीं चला। रावजी नायक के बारे में विकास ने जाहिर सभा में आज जो कुछ बुरा भला कहा था वह मदन से सहा नहीं गया। तिवरे की पंचायत के खेत में सशक्त गोवा पक्ष की जाहिर सभा से व्यक्त यह सब घटित हुआ था। एक कार्यकर्ता होने के नाते विकास ने मंच पर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा था कि रावजी नायक एक नंबर का पैसों का भूखा है, लोगों की जमीनें हड़पने वाला चोर है, औरतों पर उसकी बुरी नजर है, आदि सब बातें उसने कही थी। मदन को देखकर वह दांत पीसने लगा। आज घर पर उसे मजा चकाने का उसने निर्णय ले लिया। यूं तो मदन के घर झगड़ा होते ही रहता था, लेकिन आज जिस तरह मदन बौखला गया था उसको देखकर लगता था मानो वो आज घर सिर पर उठाने वाला है। गुस्से में तमतमाता मदन घर पहुंचने पर वैशाली को पूरा लोका जोका बताने लगा। वैशाली के पास सुनने के अलावा और चारा भी नहीं था। आप जरा शांत हो जाइए, वैशाली ने मदन को समझाते हुए कहा। क्या खाक शांत हो जाऊं? रावजी साहब के बारे में रावजी साहब ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। कहते हैं कि तुम्हारी भाई की जुबान तुमसे नहीं संभाली जाती और दल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या खाक नहीं निभाओगे? जिस तरह की बातें विकास ने आज बोली थी उनको सुनकर रावजी साहब मुझसे बहुत गुस्सा है। अब मैं करूं तो क्या करूं? मदन ने पूछा। आपके कारनामों की मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार बोलते हैं और आपके भाई अपनी इच्छा के अनुसार बोलते हैं। बीच में पीस रही हूं मैं और सुमति। चाहते हुए भी हम साथ नहीं रह सकते, बात नहीं कर सकते। आप दोनों भाइयों ने यह पागलपन अपने बच्चों के दिमाग में भी डाल कर रखा है। साथ न खेलने दे रहे हैं, साथ न बातें करने दे रहे हैं और उनको निवासी पाठशाला में रखा गया है। और अनाप शनाप मत बको, उनकी भलाई इसी में है कि वह दूसरी जगह पर पढ़ रहे हैं। और सुना है परसों तुम और सुमति हल्दी कुंकू के समारंभ में भी गए थे। तुम्हें कितनी बार समझाया है लेकिन उल्टी गगरी पर पानी। मदन और वैशाली की बस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में विकास आंगन से अंदर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मदन दांत पीसते हुए बाहर चला गया। तुम्हारी जुबान इन दिनों बहुत चल रही है। समय रहते रहते तुम मुंह पर ताला लगा दो, वरना मुंह सुई लेकर मुंह सील देना पड़ेगा। मुंह संभाल कर बात कर हरामी, तेरा कमाया हुआ नहीं खाता हूं कि तू मुंह सील देगा। बस बढ़ने लगी थी। पड़ोसी अपने घर से घटना का परीक्षण कर रहे थे। रसोई में खाना बना रही सुमति को कानों तक आवाज पहुंच गई थी। तू गालियां किसे दे रहा है? रावजी साहब के नाम लेने की तू लायक भी नहीं है और उनके बारे में अनाप शनाप बककर आया है। वो भाऊ लेकर कहां कहां मुंह मारता फिरता है, मैं बताऊं क्या? मुंह संभाल कर बात कर। विकास मदन पर थप्पड़ मारने ही वाला था कि सुमति ने आकर विकास को रोक लिया। आप कृपा करके झगड़ा बंद कीजिए। बात को बढ़ाकर अपनी गृहस्थी का ऐसे प्रदर्शन मत करिएगा। हमारे घर में दुश्मनी आग की तरह लगाकर वो लोग सुख की चैन की नींद सोते हैं। थकी हुई हूं मैं, सुमति गुस्से से बोली। सुमति, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, उस पर जरा लगाम दो। गुस्से से विकास अंदर चला गया। वैशाली भी मदन को लेकर अंदर गई। पड़ोसियों ने मात्र इस घटना का भरपूर लाभ उठाया। वैसे देखा जाए तो दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़क देते थे। मां के गुजरने के 4 साल बाद पिताजी भी गुजर गए थे। बड़ा बेटा होने के नाते सब जिम्मेदारी विकास पर आ गई थी।
मदन ने भी कुछ हद तक अपनी कंधों पर जिम्मेदारियां उठाई थी। इसके बाद दोनों भाइयों की शादी हो गई, घर में पालने जुले। इस बीच 10 साल का वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। छोटी उम्र में ही मदन ने अपने पिता के किराने की दुकान संभाली। किराने की दुकान होने के कारण आमदनी अच्छी खासी थी। इस बीच विधायक भाऊ वेल्लेकर ने विकास को अपने कार्यालय में काम पर रखा था। भाऊ ने कई युवकों को काम पर रखा था। लोगों के कामों को जानना, विरोधी कौन सी रणनीति अपना रहे हैं उन पर नजर रखना, पर्चियां बांटना, भाऊ के साथ घूमना फिरना आदि काम युवक करते थे। इस पक्ष में विकास भी जुड़ गया था। भाऊ वेल्लेकर के प्रयत्नों से गांव में बागायतदार आ गया था। बागायतदार मतलब सुपरमार्केट। लोगों ने अब अलग अलग जगह से सामान खरीदना छोड़कर बागायतदार से सामान खरीदना शुरू कर दिया था। इसी कारणवश लोगों ने बनिए के छोटे छोटे दुकानों पर जाना बंद कर दिया था। मदन को इस बात से बहुत नुकसान हो गया था। दूसरी ओर से लोगों की उधारी भी बहुत बढ़ रही थी। मदन के पास उधारी पर धंधा चलाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। उधारी सिर तक पहुंच गई थी। इसी समय भाऊ के पीछे चुनाव की तैयारी करने वाले रावजी नायक ने मदन की परिस्थिति को भांप लिया। मदन को आर्थिक रूप से मदद करके अपना सशक्त कार्यकर्ता बना लिया और मदन के पास चारा भी क्या था। देखते ही देखते मदन और विकास के घर में कब दो पक्ष और दो चूल्हे बन गए पता भी नहीं चला। दोनों भाई जैसे अपना नाता भूल गए थे। बच्चे और पत्नियां भी इस रणनीति का शिकार हो गए थे। प्रत्येक दिन कोई ना कोई संकट लेकर आता था और घर के वातावरण में बिगाड़ देता था। एक दिन मदन का बेटा पार्थ और विकास की बेटी रक्षा आंगन में खेल रहे थे। तभी मदन ने कहा, बेटा पार्थ, तुम्हें रक्षा के साथ खेलने से मना किया था ना। जिस बात के लिए तुम्हें मना करता हूं वही बात तुम्हें क्यों करनी होती है। मैंने तुम्हें सोम्या के बच्चों के साथ खेलने के लिए कहा है ना। मदन ने गुस्सा व्यक्त किया। पापा, लेकिन रक्षा मेरी बहन है ना, वो चाहे जो भी हो। तुम्हें खेलना है तो सोम्या के बच्चों के साथ ही खेलो, नहीं तो अपने कमरे में जाओ, मदन ने डांटते हुए कहा। इस बर्ताव के कारण भाई, घर, देवरानी, जेठानी और बच्चे भी इस दूर हो गए थे। इस परिस्थिति में बच्चों को इस परवरिश में दूर रखा गया था और उनके लिए वही ठीक था। जैसे जैसे मार्च का महीना नजदीक आ रहा था वैसे वैसे चुनाव की आग सुलझती जा रही थी। जहां देखो वहां चुनाव की खबरें चल रही थी। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख तक आ गई थी। घर घर में परिणाम जाहिर किया गया जा रहा था। इसी पृष्ठभूमि पर भाऊ वेल्लेकर ने बैठक बुलाई। चुनाव का प्रवाह आगे कैसे बढ़ाया जाए यह सबको जानना था। शाम के 4 बजे यह सभागार में इकट्ठा हो गए। भाऊ ने कहा, कार्यकर्ताओं, हमारा प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। आप लोगों ने बहुत कष्ट उठाए हैं और इसी तरह अगर आपने कष्ट उठाए तो हमारी जीत निश्चित है। इस बैठक को बुलाने का कारण अलग है। यह ऐसा समय है जहां पर रावजी नायक के पक्ष वाले तुम्हें अपने झांसे में लेना चाहेंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे विश्वास है कि तुम लोग उनके झांसे में नहीं आओगे। विकास को अब देखो, विकास से आपको सीख लेना चाहिए। खुद का भाई दूसरे पक्ष के होने के बावजूद भी उसने हमारे पक्ष का साथ नहीं छोड़ा है। उसी तरह अगर सब ने कार्य किया तो वह घड़ी दूर नहीं जब हमारा पक्ष सशक्त हो जाएगा। हमें बहुमत चाहिए और इसीलिए हमें रावजी नायक के पक्ष को जड़ से उखाड़ देना होगा। मुझकर केवल एक ही एहसान कीजिए, मेरे साथ रहना। तुम लोग ही मेरी शक्ति हो, कहते हुए भाऊ को सबको नमन किया। भाऊ के यह प्रेरणादायी बोल सुनकर और भी जोरों से होने लगा। विकास के अंदर भी अलग ही बल चल रहा था। विकास जिसे भी मिलता उसे भाऊ को मतदान करने के लिए बोल देता। मोहल्ले में भी मदन की इस काम का मग्न था। घर बार मोहल्ला सब कुछ चुनाव के बोझ तले दबा हुआ था। चुनाव के प्रचार के घूमते वक्त मदन से राजू से कहा, मदन, मुझे एक बात की भनक लगी है कि लेकिन शायद तुम्हें इसका पता नहीं होगा। कौन सी बात? मैंने सुना है कि नीति पक्ष सत्ता स्थापन करने के लिए प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रहा है। बहुमत के लिए उन्हें 2-3 लोगों की जरूरत है और इसके लिए वह कुछ भी देने को तैयार है। सुना है भाऊ और रावजी भी उनके संपर्क में है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? अरे बेअकल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रावजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। उस फटेहाल भाऊ के बारे में मुझे नहीं पता। वह मेंढक जहां फायदा लिखेगा वहां छलांग लगाएगा। तुम फिक्र मत करो। विकास दिन रात प्रचार के काम में लीन होता। घर से जल्दी निकलता और रात को देर से लौटता। इन दिनों सुमति और उसका बात भी करना कम हो गया था। सुनते हो, बच्चे हमें बहुत याद कर रहे हैं, जरा पाठशाला जाकर आए। यहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं है और तुम्हें कुछ भी सूझता है।
इलेक्शन होने के बाद चले जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुमति निराश हो गई। पति के मीठे बोल सुख को वह तरस रही थी। वैशाली और सुमति का दुख एक समान था। अगले दिन भोर होते ही मदन को राजू का फोन आया। उनिंदा होकर मदन ने फोन उठाया और बात सुनते ही शक्ति से साथ खड़ा हो गया। मदन, रावजी और भाऊ एक साथ हवाई जहाज में दिल्ली गए हैं, कारण कोई भी बताने को तैयार नहीं है। मदन कांपते हुए उठ गया। उसने देखा कि अचानक दिल्ली जाने का कारण उसे पता नहीं चल रहा था। मदन को नींद नहीं आ रही थी। वह बरामदे में आकर बैठ गया तो उसने देखा कि विकास के घर में भी फोन के साथ किसी से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह भी बहुत डर गया था। हो सकता है कि उसको भी इस बात का पता लगा हो। सुबह 7 बजे मदन घर से निकल गया। रावजी दिल्ली क्यों गया, इस बात को जानने की उत्सुकता उसके मन में थी। इतने में पक्ष के कार्यालय से मदन को फोन आ गया। मदन, आज ऑफिस मत आना, बाद में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिलहाल प्रचार के लिए भी मत निकलना, घर पे ही रहना। मदन तितर बितर हो गया। इस बात को सुनकर क्या किया जाए उसे समझ नहीं आ रहा था। रावजी नायक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था? जब तक वह कारण नहीं जान लेता था उसे चैन नहीं आने वाला था। मदन के घर अंदर जाते ही वाला उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गया। व्हाट्सएप पढ़कर वह ठंड पड़ गया। जीएन न्यूज का पोस्ट था। ब्रेकिंग न्यूज, समाज पक्ष के भाऊ वेल्लेकर और सशक्त पक्ष के रावजी नायक करने वाले हैं नीति पक्ष में प्रवेश। भाऊ को स्थानीय तो रावजी को पाली मतदार संघ का टिकट। आज सुबह दोनों दोस्तों का 10 बजे होगा पक्ष में प्रवेश। राजू का डर सही साबित हो गया था। भाऊ और रावजी के गर्म तवे पर अपनी रोटियां सेक ली थी। इस समाचार को मदन अस्त हो गया था। सोच सोचकर मदन की हालत खराब हो गई थी कि आगे क्या किया जाए। नीति पक्ष के कार्यकर्ताओं को वह अब क्या मुंह दिखाएगा। धीरे धीरे विकास के घर शोर सुनाई देने लगा। इस बात तक पहुंच गया था विकास भाऊ के नाम का ढिंडोरा पीटने लगा था। विकास का जैसे अदन पतन हो गया हो। सोच सोचकर वह निराश हो गया था। पक्ष के लिए की हुई सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। विकास और मदन आंगन में बैठे हुए घटित घटना पर विचार कर रहे थे। सभी के फोन बंद थे। शायद किसी के बात कोई जवाब नहीं था। बाहर निकलने में भी शर्म महसूस हो रही थी। ऐसा लगा था मानो लोगों की नजरें उन्हीं के लिए रुकी थी। भूख प्यास भुलाकर रिश्ते नाते भूलने वाले दोनों भाई एक दूसरे को देखकर सोच रहे थे, अब क्या किया जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर श्री गौरांग जी, and I'm glad that Mr. Rahul Saini is with us here. Welcome, sir. So he will be reading his story in English. Yeah, you were the first, but if you were absent, that's why. Please. I'm sorry I was late. I'm running high fever and I'm not feeling good. So in case I mess up or I fumble, please be kind. The session was called Scaling Earth to Heaven. So I just tried to think that what is it that links heaven and earth, and where are we, and what are we doing? So this is a story which I wrote probably 12 or 13 years ago, and I pulled it out and I read it, and it made a lot of sense. So I thought I'll read it out today. And it goes like this. There is something quite delicious about the first few words of a story. You never know where they would lead you. Mine led me here. The story is called The Memories of Here, by the way. It was 5 years back when I came here. Back then, I was struggling to get over a heartbreak. She had left me for another. He was richer and good looking, and well, let's accept it. He was not a loser like me. But whatever might be the cause or the purpose of a breakup, a heartbreak is always difficult to handle. My friends were very concerned about me. They kept insisting that I should take some time off from work and go on a vacation. I'm not a very stubborn person, and I always listen to people and follow what they say if it makes sense. And this did not sound like a bad idea. Going on a vacation, it was tempting. I planned everything, where all to go, where to stay, everything. My first stop was McLeodganj, Himachal Pradesh. It's true what they said in that film. If you really look, love is actually all around you. Friends, lovers, families. There is love everywhere. Newlywed couples, college students on a summer trip. They all come to hill stations like these all the time. And there I was, all alone, wandering the streets of McLeodganj.
with my all-time companion hung on my shoulder, my bag, which was a permanent abode for two things: my camera and the book that I would be reading. Looking at the shops, one could see the celebration, most vibrantly echoing in the air. And it was working. It was making me feel better already. It reminded me of something that someone had told me long back. Man has done little to make this world more beautiful. His stories of destruction are endless. But there is only one thing that makes life as a human being as a human being worth living: the sight of love. Seeing someone's love for someone is one of the most beautiful things in the world. The smile on a boy's face who has just won the heart of his girl as he gives her a pink rose. The satisfaction and the pride on the father's face whose son has brought him on a vacation with his first hard-earned money. The pleasure that a mother's face has while she holds her son's child in her arms. Seeing all this, it does lift one's spirits. Walking by myself, feeling all this around me, I could not help a smile to appear on my face. I kept walking, crossing one colorful shop after another, passing one busy street after another. Uninformed of the surroundings, deeply lost in my thoughts, I crossed all the inhabited streets. I kept walking. Then came the deserted road that connected the main town to the next village. Admiring the silent beauty of the nature, I kept walking. The faint mist in the air, the floating clouds crowning the mountain tops, the moss-covered tallest of trees, the deep valley with a narrow stream flowing in the middle, all so beautiful. Lost, I kept walking. The road bent around the mountain and revealed a fresh sight. One side of the road was a retaining wall that held the soil, the mountain, and on the other there was a magnificent church, neo-Gothic architecture, mid-1800s. A bus was parked at the main gate, a school bus. Some children on school trip. My feet magically followed the path to the church. The most colorful balloons the smaller children held. The liveliest giggles and laughters the girls gave. The fastest races the boys made from the trees to the wall of the church. The sweetest candies the teachers distributed. Happiness. I had to absorb it, at least a little bit. I took out my camera and I started shooting. One joyful shot after another, I kept clicking on. In one of the frames, I caught the graveyard right behind the church. Fascinated, I crossed the small bridge that went to the graveyard. I could hear the tranquil sound of the running water as I read the tombstone one after another. Soldier Albert Francis, 1884 to 1912. Soldier Edward John, 1896 to 1920. Numerous graves, all British soldiers. It's hard to express the feeling I felt. Looking at all those graves, all British soldiers lying dead under that soil. By the time I crossed the bridge and went back to the church, the whole place had transformed. The children had left. It appeared as if the dark grey stones of the walls of the monument could not contain their tears, as they knew that I had seen the sadness that they see every day. The huge deodar trees all around also seemed to sob. The clouds in the sky seemed thicker and threatening. The wind felt chilly, but none of that weakened my wish to explore the place more. The sign on the main door said, "Church opens only on Sundays." I went around peeking inside through the semi-curtained windows. A strange church it was. One door I found ajar. I opened it as it made a sharp squeaking sound. I went inside. Empty it was. My footsteps echoed as I walked in the aisle towards the bench in the faintly lit hall. I sat down, closed my eyes,
and said, "Little player." Peaceful it was. I opened my eyes and sat there for a while, still staring at the figure on the wall. Close to that, on a bench, in the first row, I saw a dark, shadowy figure. It appeared from the back that the person was in a fit of sobs. They were the sobs of a woman. I got up and walked towards her, stood behind her. Yes, she was crying. Standing there, I asked myself whether or not I should talk. No was the answer that I got from within. I turned around and started walking away. A loud sound, a sharp pain. I felt on my head. I collapsed. The graveyard that day got a new grave. The tombstone read, Michael Edwards, 1899 to 1930. That day, all the visions still come so clear to me, even today, 5 years since I died. There's something quite delicious about the first few words of a story. You never know where they'll lead you. Mine led me here. Now, when I had written the story, I was in a very different state of mind, but now when I read it and when I went through it again, what I felt was that getting over a heartbreak and losing the people who you love in your life, it takes you somewhere, and it always just stays with you and keeps you somewhere. And I think that's what this story was also talking about. That's all. Thank you. Thank you, sir. And now I'll request the chair of the session, P. Shiv, coming to come and bless us with her story or the saying, whatever she is like. Friends, at the outset, I would like to thank Sahitya Academy for their wonderful organizing of UNMESHA here in Bihar. And this is the largest festival of letters, the whole of Asia that it claims. And I'm really honored to chair the session. And we are all happy that we are on the dais reading our stories. Stories are fundamental to human experience. They are the threads that weave the tapestry of our society. They teach us, they shape our worldviews. We today celebrate more than just stories. We celebrate the unique beauty and the aesthetics of languages. Each language is a world unto itself, a treasury of culture, history, and a distinct way of seeing. It's just not just a tale. See, it's a distinct way of seeing our life. A story read in its original language. It's not just a story, it's an invitation into a different soul, a different perspective. Today we have the privilege of having 3 authors here from different languages, and including me, we are 4. Crossing these linguistic bridges, we will travel through different lands. She talked about London, UK, and he talked about election and the rural areas, experience different emotions and understand different truths, all carried on the wings of varied languages. And of course, we couldn't do this without our wonderful audience. You are the ambassadors. I invite you all to listen to the story that I'm going to read. It's in Tamil, it's named as Ariya Malar, means a rare flower. And I don't know why I kept the title, but I'm trying to see what is rare in the world. Probably, except the flower, I couldn't see anything better where I traveled. But this is pretty long, but I'm going to make it short. There are 2 portions.
The first portion, there is a character called Narmada, whom the storyteller interacts with often. Through conversation, she wants to bring out the views of Narmada. By hearing, you will know who's Narmada and what are her worldviews. And another character is Kitan. Kitan is from Northeast and he is an officer. And his experiences he shares in this story. So I will start reading. The idea that dawn would bring sleep with it proved wrong. My head ached because of lack of sleep. Narmada would arrive at exactly 8. I had to get ready before she arrived. The heat was slowly abating and the rainy season was beginning. And needless to say that this was evident in Shimoga. I am from Tamil Nadu, but the story happens in Shimoga. In the border towns of Titahalli and Soraba, the tall Sahyadri hill range trapped the clouds and drained them of all moisture. Last monsoon, water from the Batkal Sea had flooded the salt pans and the town. I wanted to take a stroll in the garden. The seasonal change brings with its cholera, infectious fevers and headache. I had a very bad cold. The moment I entered the garden, I had a bout of sneezing. Little black insects disturbed by the train entered my nostrils. The flowers of the gulmohar, which had been drenched by the rains the previous night, lay on the ground, crushed by people walking over them. This is how I remember the rainy days. I travel a lot. I usually return to about 2-3 days. But this trip I was going to take wasn't in my hands. I had to be away for a month, visiting different places, initiating inquiries into many matters, because there was a lot of work to be attended to, and because I didn't know Kannada, an officer called Narmada had been asked to help me. She was in an important position in the district panchayat. Narmada must have been attractive when she was young. She looked prosperous. Her supple waist, barely hidden by her sari, was attractive. She had a unique way of interacting with me. She ensured that I was aware that she was respectful towards me because it was her duty to be so. But she always indicated that she didn't have any respect of me. I couldn't say if the fault lay with me or her. I opened a book of American history to read on the journey. Let me have a look, she said. She flipped through the pages of the book, and after a few minutes she asked, "You are very easy to get on with." I wanted to ask her if the book informed her that I was affable. Instead, I said, one has to be formal only in the office, and other times one can be friendly with other officers. But most people aren't like you. Why? She asked. Her question seemed like flattery, so I didn't answer her, but began to read my book. Your batchmate Dimmappa would always ask me to accompany him when he went on tours. I recalled that Dimmappa, so I'll skip this because it's going to be long. Before we reached Shimoga, we came to Shivappa Nayaka's place. There was a picture of him with a thick white mustache. He was wearing a dhoti that looked more like a skirt. A turban with a gold foil was wrapped around his head. Looking at this picture through the eyes of modernity, I couldn't help wondering why kings were dressed so funnily. Shivappa had annexed a large territory through military conquests. When I read those details in palm leaf manuscripts, Narmada whispered in my ears, "I have already made arrangements for your visit in the local temple. Everyone is waiting for you." She explained that it was an ancient temple. Priests with tufts were reciting some Sanskrit mantras, decorating a stone and indulging in what seemed like a doll play. If something was sacred simply because it was ancient, then the Vedas were sacred. The next question that rose in my mind was about how to break free from this illusion that something was sacred because of its ancientness,
Narmada generously dropped a 100 rupee note on the Deepa plate. When the priest spooned water on my palm, I washed my head with it. Narmada said it was tulsi water that I should drink. In future, let us avoid temples, particularly if they have no artistic value, I said. But she took me to a shelter for cows. Narmada pointed out foreign breeds, crossbred cows and bulls, large country cattle from Rajasthan, and thus she won me over. There was a huge Mahanandi bull, its black skin glowing. Its huge hump was impressive. There were many varieties of bulls and cows. There was a screen with an image of a young pontiff whose eyes were as large as those of cows. He was in the pose of massaging a cow. Next to this was a picture of a local MLA who is exempt from the fear that if we don't extol our achievements, others will never know of them. They were selling tooth powder made of cow's urine. I bought some. The pontiff wants to meet you, Narmada said hesitantly. We were made to wait in a spacious anteroom. Many people were waiting outside that room. Were they envious of us? A little later, a young man in ochre robes, holding a silver chowri and silver pot, announced the arrival of pontiff immediately. Narmada and others rose hastily. A retired police officer has been appointed as pontiff's assistant. He had retired from the police force only a couple of months ago. Narmada pointed to a thin, bare-chested man wearing a sacred thread. A cow in the tiger's skin and a tiger in the cow's skin. I tried to make a comparison of before and after retirement. Why did I have to think on these lines? Why could I just see it as an act of piety and retirement? You are lucky to have come through a dense forest to visit this place, said the retired officer, and was about to explain what that meant by lucky. I stopped him and I said, I know. The pontiff gave me a dark yellow silk sari with the checks and thin lines of zari. I couldn't accept the sari like a poor villager. I hesitated. This is an honor few receive, said the retired officer. Please stay and eat our humble fare. No, I have no time, I said. Please have something. I was offered rasabale bananas, cow's milk, cashew nuts, and raisins. There were 250 acres of land with areca nut plants belonging to the mutt, and I saw many dark-skinned people working on the fields. We should not fall at anyone's feet, I said. He is our guru, so it is acceptable to us, replied Narmada. 2,000 acres of land belonging to the mutt have been acquired by the government. There is no space for animals in this world. Cows are being killed for their flesh. Man does not love nature, said Narmada. Every now and then, Narmada expressed her opinion on something or other. By the time we reached Titahalli, the sun was disappearing behind the area, behind the areca nut farms in the west. Titahalli was a small town. Food had been prepared for us in traveler's bungalow in the middle of the forest. The chapatis were dry and the okra curry was cold. Don't the people eat here beef? I asked. My question shocked Narmada. Such things are not made in traveler's bungalows, said the cook who served us the food. After we had eaten, I began my inquiries. I thought my questions were good. So then we went to them. I'm skipping a few lines here and there. Devanagari saris were once famous. Now the mills have closed down, the result of globalization, said Narmada, during our journey to Shimoga. That's the case in Tamil Nadu too, she continued. I wear silk or cotton. Polyester saris are cheap. Everyone from the office peon to clerks wear different kinds of synthetic saris. That's why I've changed to silk and cotton. It was only natural that I began to think of how one segment of society wanted to retain its identity and establish its superiority, and how another wanted to lose its identity and merge with the rest.
I had visited the house of a Brahmin woman recently. She served me coffee in a porcelain cup and her Brahmin visitor in a stainless steel tumbler. After the conversation with Narmada, that incident became the focus of my thoughts. I didn't sleep that night, neither the television nor my books. I will go to Kitan because there are a lot of other things to read about Narmada. On the way back, I noticed a rare plant. It was a robust plant that grew in the hills. It grew from a tuber that looked like a large pot. The smooth stem rose from the tuber like a Russell's viper. Its phallus-shaped tip was the color of an onion. The flower had just one pink petal. With great difficulty, the driver plucked it for me. I ensured it was put away safely. When we stepped into Kwempu's house, that is also I'm avoiding because it's about some literature portion. It's a pretty long story. Okay, I discussed with, only 3 minutes left, I'm going to complete. I discussed with Narmada the next day's schedule and prepared a report based on the day's critics. Now we come to Kitan. Kitan reminds me of a previous bus. Do you know Kitan does no work at all? The bus is that he takes the car to Bengaluru where he drinks with his friends. My previous boss who belonged to the schedule caste acted in films. How can an officer act in films? How could the women go to him for his signature on files? His behavior was indecent. He looked indecent too. Once when I went to his room for his signature on a file, he stood there like a rowdy with oil all over his body, said Narmada. So, though it's not disjointed because it's all full of conversations. So it's about Kitan's training period. There is a Tamil proverb which says, if a mother takes an 8-foot step, her offspring will take 16-foot leap, I said. That they said I was Bansilal's man. This is Kitan. Then they said I was supporter of Om Prakash Chautala. As for my life, she said, I was her man. As far as my wife concerned, she said, I was her man. Sadly, today, I am nobody's man. I am an orphan. He said, so I laughed. Aha, you laughed. You have thus broken the restraining boundary of seniority. I laughed heartily. It was the training period. My senior officer was very hard-working, poor man. He would work from 6 in the morning until 8 in the night, but he had a feudal mentality. A portion of his house had been converted into an office. This is customary. If you had visited in UP and Bihar, you know the collector's office is huge and surrounded by huge gardens. One day he sent the peon to summon me to the office, as if he couldn't have made a phone call. Anyway, I rushed to the office, not knowing what the urgency was. He made me sit before him and went on talking to someone on the phone. He then opened the files and began to study them. I sat there for an hour, not knowing why he had sent for me. In a short while, the intercom buzzed. He answered and rose to go in. He returned a few minutes later. I rose again. He was called again on the intercom and he went in again. I just sat there doing nothing. He came back after a few minutes and noticing that I was still seated, he said in Hindi, you don't get up when a senior officer enters? He asked. My blood boiled, but I sat there silently with my head bent. When he went in third time, I not only did not rise, but smoked a cigarette. After he returned, when I was smoking, I finished my cigarette and stubbed it out in the ashtray. His wife would call him 100 times. Did one have to stand up every time he went in? What did he expect, Sala? Kitan apologized to me for using the word Sala and continued. Do you know what he did next? He said, Kitan, I don't want you to meet again. You need no training.
Don't be afraid that I will give a bad report about you. After that, I never met him. The purpose of this narration is to drive home the point that senior officers must be friendly. I don't like junior officers being treated like peons. I asked him, and how should a peon be treated? A peon should be treated like a peon, he laughed. That's just a joke, he said. Some officers are worse. There was an officer who was very proud of his honesty. He had the idea that except for him, all other officers were corrupt. He was very close to the chief minister. That's surprising, I interrupted. Why should you be surprised? It's good for the chief minister if an officer whose hands are clean is close to him. All the collections will come to him entirely, and the officer is happy to be close to the chief minister because he thinks it is a reward for his honesty. Okay, continue. I would stop here. Yeah, because there is no time. And thank you very much. No, thank you very much. Actually, it is really, that gives me pain to stop someone while reading a story, but we are all, in the boundary of time. So I will request, thank you all the storytellers for the session. I will request you to stand up for a group photograph for the records.